we are supposed to be aware about certain business jargons. For if you are looking for a career in corporate houses, so you should be aware about the terms like corporate, placement company, corporation. Then you should always be aware about biodata, CV, and resume. Then you should be aware about job. What are the job centers? And what do you understand by job share? Then there is one thing popularly known as Viva Voce and leading to interview. You must be aware about two terms like interviews and intraviews. View is a method of having an opinion of the knowledge, ability, and work culture. There are multiple methods of knowing the ability and testing the knowledge of a person who is going to appear for an interview. Your view on life, your views on career, your views on your set priorities will, or you can say should match with the views of those who wish to partner with you in the growth of yourself and in the growth of your company. So, interview is a process like group discussion. Interview is a process of partnering a person in the journey of the success. And for that purpose, we are supposed to be well prepared. There is another term, interview. By doing interview, you practice or you try to introspect your abilities. Where do you find yourself fit? Or you go for some time internal overhauling of your thoughts and opinions and make decisions. That's the talk of interview. When it comes to interview, it's an bipolar process where few representatives, authorities of a particular group, particular company, particular corporate house, or a particular corporation, they try to look for the like-minded people that may contribute in the growth of company and who may be mutually beneficial for the company as well as for themselves. Sometimes ideological mismatches lead to the loss of both the candidate as well as the corporate.
Interviews may be of many types. It may be formal, informal. Informally, we are being interviewed always. For example, if we happens to meet a friend somewhere and he asks a question, how are you? Means he is inquiring about your well-being. So in our day-to-day life, we are interviewed. In your telephonic talk, if somebody is asking you, how are you? Hi, how are you? Hello, how are you? Means he is interviewing you about your well-being. If some unknown person you happens to meet, what's your name? You are also being interviewed at a time. But when it comes to job interviews, you feel like you may lose or gain, your career is at stake, and that became the serious hot spot of the interview. And then we became more and more, we become more and more conscious. And then we are tending to commit mistakes. Now you can differentiate or distinguish between interview and interview. Anybody please? Interview is like when we start questioning ourselves. And then we try to improvise upon that. When we try to enhance our own performances, or when we try to counsel ourselves, when we try to draw inspiration from within, or when we try to, draw certain output, that becomes the interview. But interview, when somebody else, certain representatives, certain experts, certain, panel, they try to draw your ability or identify, relate, or they try to then inquire about your ability, your professional ability, your professional expertise, then that becomes the interview. So here at this point, I would like to ask that are you comfortable in the basics of interview, or what is interview and how is it different from interview? Anyone from you should unmute and please. What do you understand by the term interview? Here before moving further, four things we need to make clear. First, what is interview and how is it different from interview? Then formal and informal interviews. I expect an answer
that what do you mean by intraview? When you talk in the terms of placement, placement is an act of finding a suitable job or a place to live. A job placement, service, or placement with a foster family. Akriti Jaiswal, would you like to answer? What do you understand by interview? Ashutosh, would you love to answer the same question? Sir, can I answer? Yes, please. Sir, Ashwini this side. Yes, got it. Sir, interview is the structured conversation where one party asks to another party and he wanted to know of the other things. जैसे कि क्या होता है सर हमारे इंटरव्यू में, हाँ, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। इंटरव्यू पूरा फॉर्मल होता है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है जिसमें सारी चीजें क्लियर होती है, अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो उसको एक इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में वो सब कुछ जानना चाहती है, तो इसको इंटरव्यू बोलते हैं एज अ प्लेसमेंट, अगर हम बात करें प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में तो। Beta, based on output, interviews are divided again into two parts, structured interviews and unstructured interviews. So you cannot say that all interviews are structured. Sir, There are certain unstructured interviews as well. Yes. यस सर, आई एग्री विथ यू। Akriti, you wanted to tell something. yes, sir. Sir, to communicate to others by asking And when it is said it's about interview. intraview means, no, intra means when you are communicating with yourself. Interview when you are challenging Sir, there yourself. is a network issue. Sir, I am unable. Okay, no issue. Abhishek, can you focus on it? So may I try to answer? Yes, beta. So when we talk about interview, so by saying about interview, one person tries to introspect or self-evaluate himself or herself, or self-analyze himself or herself. We can also say that interview is a basis of self-exploration. It is like what am I and what I want to be. The bridge between Yes, these both the yes. questions answers the part of interview. So when we talk Very, about interview, so interview, yes, sir. So when we talk about interview, so at the point of interview, my career is at my stake. So I may lose the job or I may gain the job. In this aspect, there is a high level of consciousness in me or anyone who is facing the interview. So I tend to commit the mistake. So in this case, I need to be more self-conscious about the pros and cons of the interview or the upcoming level of job security or the things of understanding, sir. very good. Anybody else would like to tell something about interview? There are two terms. I am opening debate on that, discussions on that. First is intraview. First is intraview. Second one is interview. Intra means inside, looking introvertly. And when a person is trying to look inside, starts questioning himself. Like in Mahabharata, just before the battle, Karna started questioning himself that what should he do? He should side his friend
or he should side his brothers. That was an Interview, sir. attempt, Interview. yes, an attempt to questioning himself or questioning oneself. When Karna was questioning himself and trying to find out the solution out of that. Many a times in our life, we had fallen in certain situations where we need to question ourselves. That to be or not to be, that's the question. When you started interrogating yourself, when you started introspecting yourself, that stands the interview. Now moving to the interview. Professionally, interview is a process of identifying knowledge, assessing ability, interests, and eligibility of a person that may match for a particular job, or knowing the expertise of a person, or knowing that who is fit for what. That is a kind of interview. Placement interviews or job interviews, or you can say employment interviews. These interviews where Aditya rightly said that a lot many things are at stake, where a candidate is stressed, heavily stressed, because he thinks that he may be a winner or a loser based on that. And if he loses that, he may be losing an opportunity. Clear? And he is not knowing that what will be the second time when he will get it back. So it is, it causes, nervousness. It causes panic, and it causes that kind of seriousness. Let us try to explore that what are the types of interviews. Would you like to add on your end, anyone? Would you like to add anything from your side about the types of interviews, or should we move to the types of interview? Interview is the process of visualizing the ability. It has two ends. One is one who is interviewing. Means I am using two terms, interviewee and interviewer. When you talk about interviewee, the person who is being interviewed, and when you talk about interviewer, the person who is taking the interview. So interviewee is the candidate who is participating in the interview, but interviewer is the expert. Now two parties are there. And I would like to divide interview process into two parts, formal interview and informal interviews. Let us talk about interview types. The first one is employment interviews. When you talk of employment interviews, sometimes shortlisted candidate after the written examinations are called for. This process.
in which the final decisions are supposed to be made. For that process, candidates approach to a decided place and there the face-to-face interview is conducted. Earlier, it was considered to be a guarantee of a job when you are about to clear. But nowadays, interview is a forum where a candidate or interviewee may prove his abilities, knowledge, experience fit for the desired position or the desired job. And when the objective outcome is to get an employment, that becomes the employment interview. Objective outcome for the expert, where the objective outcome for the expert remain to get or to select a prospective candidate for a suitable job and partner with him is considered to be an employment interview from the side of the selectors or interviewers. So first is employment interview. Second one is orientation interview. When you have a team and a few members of your team are not performing well, or their performance may be upgraded to the next level, you need to orient them and you need to motivate them. That's the orientation interview. Third type of interview, you can call it counseling interview. Even after your orientation, if somebody is not performing very well or not performing excellently, so you will call that candidate and try to identify his problems by asking certain questions, and you will realize you will reach to the ailing factors and you will try to counsel him so that he or she can perform well. So that becomes the counseling interview. Then there comes performance appraisal interview. You have already selected your team and you want to identify that who is fit for what or who is based out of that. Based on that, who should be rewarded and who shouldn't, or who should be considered as the best employee. Then you will go for performance interview. In our university also, we have a process. We have a process of rewarding the best or appreciating the best, and you will realize that our university try to go for that, go for selecting the best among the professionals working over here. And you will see I'm sharing my screen. Even today itself, a process started for identifying the best of the lot. And you will find over here, are you able to see my screen? Yes, sir. What is that? What is visible there?
Quick. Sir, it's an email and ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर मालवीय उत्कृष्ट सेवा अवार्ड दिए जाने संबंधित आवेदन पत्र. Yes. So you will, if I will share this further, the attachment, you will see that, let me open the attachment. It is downloading very slowly. Let us discuss. So based on that, you will find that the abilities of the candidates are identified, that who is fit for what. You will, till then, I would like to focus the content of the mail. You may read from there. Dear sir, please find the attached file for your kind information and needful action. So that there will be a form. This is more structured when we were talking about that. It is, you know, certain interviews are written interviews. Got it? Certain interviews are written interviews. So you will find that based on the performance appraisal, you may select the best candidate who is the most deserving candidate who may be fit for a particular, you know, position. Then you will realize that grievance interview. When you start talking about grievances of the other, somebody is aggrieved, somebody is not performing well or feeling ignored out of your team. So you will try to realize, you know, HR policies, when we start talking like that, if you are having a member of team of 10 and your opposite counterpart or competitor is also having a team of 10 and one of your team member joins him, so you will be the loser and it will not make a difference one employee if he is going to join your rival business partners group and he partners with them. So you will be having 9 and they will be having 11. And that way on the HR part, you will be suffering. So we talk professionally that human resource management, human being is, you know, a resource. The team that you are working with, where human being is a capital management. And when you start talking about human capital management, then it becomes your team member becomes capital for the for you. That human resource is human capital, and you cannot afford to lose him anymore. Here I would like to share you the screen, the attachment. Now I think it's visible for you, and you may go for the discussion. You may realize, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On a screen, what is visible? Is there any letter? Oh, Yes, yes, sir. sir. Can Yes, you sir. read very quickly, just letter one? सर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर Yes. अधिष्ठाता विभागाध्यक्ष समन्वयक प्रबंध अध्ययन केंद्र टेक अध्यक्ष ITRC
चिकित्सा समिति, छात्र क्रियाकलाप परिषद, चीफ वार्डन, समस्त अनुभागीय अधिकारी, यूनिट के प्रभारीगण, छात्रावास अधीक्षक, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक। कृपया दिनांक 26 जनवरी 2022 के अवसर पर आपके विभाग अनुभाग में नॉन टीचिंग टेक्निकल स्पोर्टिंग कर्मचारियों ख, ग एवं घ को मालवीय उत्कृष्ट सेवा अवार्ड दिए जाने से संबंधित आवेदन पत्र नामांकन की कॉपी संलग्न प्रेषित है। उक्त नामांकन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिन 2022 के अपराह्न 1 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा देवें, जिससे अनुसार की जा सके। संलग्न उपरोक्त। So you will find that there are details, and then this is a complete form, a structured form to identify the abilities and performance of the staff. So these are certain practices that are supposed to be supposed to be taken into account, and there you will find that this is how the performance appraisal interviews may be conducted after having the data at hand. Now I would like to share with you that this is very, very structured process of performance appraisal interview. Then you will find grievance interview. So grievance interview, if somebody is not happy, somebody is sad, so as an HR manager or director HR, what is your job? To identify the problems the person is facing and sort it out, the grievance, if possible, up to the level of your best. Then there comes correctional interview. When you start correcting, you identify certain problem and you try to correct your team. So some correctional measure. Sometimes we all are human beings, we all commit mistakes, and there is nobody born on this earth who has never committed any mistake. So, but the best thing is that to accept and learn from our mistakes and not to repeat it. So that correctional steps are required for professional competitive success, and this era of spearheading competitiveness, correctional measures are very, very significant. So correctional interview. You will find there another type of interview, exit interview. If you as an employee are not feeling comfortable at all, so you may go for exit interview, and for that purpose you may say goodbye to the company. But if your staff is quitting, so as an HR expert, it's your job also to identify, to ask questions, and then ask questions to your staff that why he is quitting, and you can is there anything adopting that you can change your corporate practices or make your team stronger. So it depends totally on the kind of practice you will be adopting in your corporate practice. So that way it's your job to find out that what is the wrong practice that you can remove, and what are the right practices that you can introduce. So these are the things that will be helping you out that way. Then there comes information gathering interviews. What is that kind of interview? Information gathering interview. How will you gather your information from the experts to whom you are going to talk to? So you will realize that normally I used to tell you that
in Oxford University Press, people used to interview the experts visiting over there. And then they collect information about the latest practices, latest thing being practiced over there. And based on their practice, they collect information, and based on collection of those information, they try to, highlight the achievements of the others. Here is one interview that I appeared for, but I would not like to, run it for the longer duration. But for a moment, since this is an audio interview, so I would like to share here this interview for a moment that I had to appear in Oxford. Then I would not like to run the complete interview, but I wish you to have some exposure of, I'm skipping the parts and you may have just. Here are certain part of the interview that so let me stop it, this part of the interview, because it's 1 hour or even more than that. This is just, this is a kind of interview, information gathering interview, where expert will try to gather information from you, and you will be giving information, and they may use it for further research and other parts. Then there is one also another type of interview that is known as expert interviews. When you meet certain expert and you try to conduct interviews from them, then your opinions matter for the newcomers of your field. That becomes the expert interview. Here again, I would love to share the screen where one of the expert interviews was published by Silicon India. This is a kind of written interview and a very structured interview. They asked me 15 questions, and then these questions were answered by me, and they put it as Silicon India story. So you find here certain questions asked by them. uh, can you anyone read just questions, not the answers? Anyone would like, are you able to see the screen? So one student, I request you that you please read the questions only. Anyone please read? So the first question is,
what changes do you see occurring in your field of education during the next 5 years? Sorry, few years. Next few years. Good. Second Yes, sir. question. So the next question is, what do you, yes, sir, what do you think is the biggest challenge facing by the students? Third. So it's On the not top. visible, sir. Third question. On the top. This one. Uh, I'm, I'm unable to see the. Yes, sir. Yes. So what? How do you decide what gets top priority? No, not the top. Describe Even above your most. this. Yes. Good. Uh, so You are how do right. you decide what gets No, the top top priority? one. The earlier one you When, were reading. Describe most rewarding teaching sir, experience. yes, sir. Yes, sir. So Then describe your next one most is rewarding teaching experience. the next question is So it is partially visible. how do So it is you partially visible, sir. I'm not able to see the full question. Yes, sir. So how do you decide what gets top priority when scheduling your time? next? So the next one is, what are your advice or suggestions for upcoming people to your profession? Next. So it is still not visible. The next one. Can you share with us yourself education and teaching background? Yes, sir. Then next Yes, sir. is Can you share with us yourself? It is still this not one is visible, sir. It's next. the next one. Okay. Next, it came next. Yes, sir. Can Could you? you tell us? Yes, please. Yes, sir. About your family background. Then there comes. Would you like to share any important lesson you have learned in your life? Can you tell us about a role model who inspires you and why? How do you manage your skills so students stay motivated in their studies and dreams about career? Then there comes brief about your opinion to increase the participation from students in development of nation. Then next question is, according to you, what else can be done to make teaching more effective and practical? Then what are the non-academic book or article you read and what impact did it have on you? Then you will find another question. What is your strongest subject and why? Then could you share some of the things India wants to consider to increase quality of education? You got the point? So this much were question and this interview was put on the pages of siliconindia.com. Let us move to the, this is what expert interview when we were talking of that. Then you will talk about, so expert interview, when you try to draw expertise from the targeted person whom you think that is expert for that particular problem. And then there comes a structured interview that at the very beginning, one of your friends shared the opinion. So structured interview are very useful and they are very designed and they have a kind of pre-planned questionnaire and that becomes the structured interview. Then there is unstructured interview. When you go for unstructured interview, it's unplanned and a wastage of time where output will be less and time consumed will be more. Then there comes group interviews. You might have faced group interviews. Anybody would like to tell what do you mean by group interviews? As in certain examination and in certain situations, you are interviewed by a particular group. So a group of the candidates are being interviewed together just to save time and manage things.
Then there comes another type of interview, situational interviews. When suddenly certain problems come and you want expert opinion, you visit to that expert for sorting out the problem, and ultimately you sort out this, you got the solution, how to solve the situation. And then finally panel interviews. So here I would like to recapitulate. There are two things, interview and interview. Interview when you question, introspect yourself. Interview when you are being interviewed by the others or you are interviewing the others. There are two persons in the role of interview, or may more than two parties involved sometimes. So there are those two person, maybe two group, maybe or two parties may be known as interviewee and interviewer. Then they ultimately you will come to the types of interview. Interview is a process of knowing expertise, sorting out to sort out certain problem or to identify best of the candidates. And interview types may be of many types of interview. Out of that, a few more significant types of interviews are employment interviews, orientation interviews, counseling interviews, professional performance appraisal interview, grievance interviews, correctional interviews, exit interviews, information gathering interviews, expert interviews, structured interviews, that is to draw more output in the minimum time, unstructured interviews, then group interviews and situational interviews and panel interviews, or even many more. So these are the types of interview. I would like to focus before closing. So are you satisfied with this much type of interviews discussed with you? Anyone? Sir, Yes. sir, I am Mrityunjay. Yes, please. सर अभी हम इंट्रा पर्सनल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सॉरी सर, इसका हिंदी नहीं मुझे पता है. इंटरपर्सनल इंटरव्यू का तो सामान्य अर्थ में वो साक्षात्कार हम बोलते हैं. वेरी सर गुड. हाँ. मेरा एक प्रश्न ये है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पे हम अपना व्यक्तिगत अपने क्षमताओं, योग्यताओं और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हैं. खुद से ही हम मूल्यांकन करते हैं. हम अपना दृष्टिकोण, जैसे मेरा क्या उस परिस्थिति में अगर मैं रहता तो क्या करता. तो क्या हम इसको इंट्रा पर्सनल इंटरव्यू का जो श्रेणी है उसमें हम इसको रख सकते हैं क्या? हाँ, you can put it intrapersonal interview. And then Actually, sir, intrapersonal actually interview when you say, let me sir, answer please. Yes, sir. I want to elaborate this because ऐसा सिचुएशन आज मेरे समक्ष एक आया. वो हुआ यूं कि आज मैं सर कचहरी गया था, दीवानी कचहरी गया था. I am along with Vaibhav Kant. Vaibhav, are you there? Yes, I am here. सर हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जैसे वहां पे एक मर्डर हो गया हमारे सामने. Today. Yes, sir. Today, sir. कुछ ऐसी थी कि एक जो वहां पे जो जिसका मर्डर हुआ, जिस शख्स का वहां पे हत्या हुआ, वो सर पॉस्को एक्ट में वो एक पॉस्को एक्ट का अपराधी था और उसकी हत्या जो पीड़ित लड़की थी उसके पिता द्वारा उसको सर में 2 गोली मार के कर दी गई कचहरी के अंदर में. हम लोग वहां पे घटना पर थे. परिस्थितियां हम सामने कुछ ऐसी आई कि सर वहां पे तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भी प्रशासन से संबंधित जो लोग थे सबकी मौजूदगी वहां पर थी. सर हम ये आकलन वहां पे कर रहे थे कि तमाम लोग जो वहां पे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये त्वरित न्याय, जैसे कि वो पीड़ित एक तो रेप पीड़ित थी वो बच्ची, उसका वो उसमें वो कल्पित था वो लड़का जिसकी हत्या हुई. तो सर उसके पिता ने जब उसकी हत्या कर दी वहां पे, तो तमाम लोग क्योंकि जुडिशरी से जुड़े भी लोग थे वहां पे, तो उनका भी कुछ ऐसा दृष्टिकोण आ रहा था कि हाँ त्वरित न्याय है, सही है,
रेप का आरोपी था, मार दिया, अच्छा किया। तो ये अभी प्रीवियसली भी हमने देखा कि निर्भया कांड में भी ऐसे मामले हमारे सामने उजागर हुए थे, एक हैदराबाद में भी ऐसा मामला आया था। तो सर ये त्वरित न्याय का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया तो मुझे भी अच्छा लगा कि सर हाँ, त्वरित न्याय है, अच्छा है ये। क्योंकि अगर हम वैश्विक स्तर पे भी देखें तो खाड़ी देशों में भी वैसे ही बलात्कार पीड़ितों को ऐसी सजा दी जाती है, सरेआम पत्थर मार के। चाहे आप यूएई की बात कर ले, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, इनफैक्ट चाइना में भी है, उत्तर कोरिया में भी है, और पॉस्को एक्ट में भी हमारे पास बहुत सारे आईपीसी की धाराएं हैं, पर वो विफल हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा था सर, वहां पे मैं अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पे मैं वहां पे अपना दृष्टिकोण बना रहा था कि क्या ये त्वरित न्याय का कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्या मैं वहां पे एज ए एसएसपी रहता तो मैं क्या करता वहां पे। तो क्या मैं ये पॉस्को के धारा के अंतर्गत जो था मैं इसको सही मानूं कि पिता को थोड़ा लिबरल होके छोटे मोटे धाराओं में करके मैं वो मैनेज कर लूं, या फिर मैं कानून से बंधा हूं तो हाँ उसको प्रॉपर जो जुडिशरी के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसको मैं सजा दिलवाऊं। तो मेरा ये क्या सर, ये इंट्रा पर्सनल जो इंटरव्यू है ये आएगा इसमें सर? मेरा ये कुल मिला के ये ऐसा मोटा मोटा था। गुड। आपने पहले शब्द बोला बेटा इंट्रा पर्सनल। जब आप इंट्रा पर्सनल बोल रहे हैं तो वो इंटरव्यू नहीं है, इंट्राव्यू है वो। आपने ओके। जो कुछ भी प्रोसेस से गुजरे, क्योंकि व्यू मैंने क्या है, दृष्टि। ठीक है, व्यू मैंने विजन या दृष्टि। अब वो जब अनफॉर्चुनेटली आवर आईज ओपन आउटसाइड, और वो जो अंतर्दृष्टि है वो क्या है, इंट्राव्यू है। लुकिंग इंट्रावर्टली, तो वो इंट्राव्यू को आप इंट्रापर्सनल व्यू बोल सकते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल इंटरव्यू नहीं बोलेंगे। इंटर मैंने जो बाहरी आ गया सामने वाला, जैसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंटर स्टेट टूर्नामेंट, ठीक है, वैसे वो इंटरव्यू है जब दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए, दो एंटिटी, मिनिमम 2 एंटिटीज। हियर इंटरव्यू में आप खुद के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन आउट ऑफ दैट। अब रही बात कि देखो, पहले तो इसको सिंपल सा जवाब है तुम्हारे क्वेश्चन का कि आपने इंटरव्यू किया और यू बोथ ऑफ यू वर डिस्कसिंग। जब आप दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो वो इंटरव्यू था, ठीक है, कि क्या ये ठीक है, गलत है, सही है। व्हेन यू वर टॉकिंग टू ईच अदर, दैट वाज इंटरव्यू। व्हेन यू वर थिंकिंग कि इसका इम्पैक्ट आपके माइंड में इतना ज्यादा था कि you couldn't stop yourself to sharing this information and raising this question for the discussion। और जब आप अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाए, ये आपके इंटरव्यू का जो मन में आपके वो था, वो बहुत ही पावरफुल एक व्यू था इंटरव्यू, जिसको कि आप शायद शेयर नहीं करते तो ये मन में आपके एक जख्म का रूप ले सकता था आगे जाके, या एक आपको अपसेट कर देता इवनिंग तक जाते जाते। यू माइट हैव लॉस्ट दैट पीस ऑफ द माइंड, है कि नहीं, कहीं ना कहीं। देन यस सर। अब रही बात ये सवाल की कि वेदर दैट इंसिडेंट वाज राइट और रॉन्ग, क्लियर। तो जो भारतीय समाज है, एक होता है मतलब नेचुरल जस्टिस, एक होता है पोएटिक जस्टिस, और एक होता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में ये कहा जाता है कि आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। मतलब नेचर इज द ऑलमाइटी एंड ही विल रिवार्ड यू एंड पनिश यू, ठीक है। लोग नहीं कहते जा जा तेरे को बद्दुआएं लगेगी, और किसी की दुआएं लो, बद्दुआ मत लो, वो तुम्हें जो है वो कहते हैं पीछा करती है, जो दुआएं हैं या बद्दुआएं। तो दैट इज वन थिंग, नेचुरल जस्टिस। व्हेन यू टॉक अबाउट पोएटिक जस्टिस, तो पोएटिक जस्टिस में सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब लिटरेचर में जब आप पाओगे तो बड़ा राम रावण वाला जो काल्पनिक चीजें हैं, या जिसमें ये कह लो कि बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड या वो चीजें हैं, वो होती है। कहते
कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, वो भी पोएटिक जस्टिस का ही पार्ट है। अब आते सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस में कई तरह का समाज है। एक ट्राइबल समाज है या बार्बरिक समाज है। पहला बार्बरिक एक्टिविटी उसने किया जिसने रेप किया, ठीक है, पास्को एक्ट उसके ऊपर लगाया गया। अब जो कहते हैं जंगल जस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? जंगल का न्याय। क्या? टिट फॉर टैट, यू किल्ड माई डॉग, आई किल्ड योर कैट। Yes. ठीक है ना? टिट फॉर टैट, यू किल्ड माई डॉग, आई किल्ड योर कैट। मर्डर, हत्या का बदला हत्या। Yes. ये जंगल का कानून बोलते हैं। अब रही बात ये कि देखो पुलिस कहाँ फंसती है और जनता के उसका, जैसे आपने बोला कि अगर मैं आईपीएस होता तो मैं क्या करता। आपने क्या एग्जैक्टली क्या शब्द बोला था? वो कौन सी पोस्ट पे होते? आईपीएस ही बोला था? क्या बोला था? सर कि मैं एसएसपी होता तो मैं क्या करता। अगेन आप ये सोच रहे थे, जो कहते कि भारतीय न्याय प्रणाली अपने आप में बड़ी अनूठी है। कभी आपने सोचा कि अगर यह अनूठी है, पहली बात तो एक निगेटिव पॉइंट भी ले लें, यहां एक आदमी को न्याय मिलने में कई बार उम्र कट जाती है, पीढ़ियां गुजर जाती है, अंत में वो न्याय मिलता है तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी मतलब न्याय नहीं मिलना। जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। बट अगेन जो भारतीय दंड विधान है, जो भारतीय न्याय शास्त्र है, वो ये कहता है कि हजार गुनाहगार छूट जाए, हजार गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक आदमी जिसने अगर गलती नहीं की है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी उम्र कट जाए। वो जो है अब इसी चीज का फायदा लोग उठाते, ठीक है, कि कहते न्याय के अपील का पूरा मौका उसको मिलना चाहिए। पर्सन हैज टू बी गिवन द फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग द जस्टिस, ऑब्टेनिंग द जस्टिस। और दूसरा, क्योंकि वो आपकी निगाह में गुनाहगार है, पता नहीं रियल में वो है कि नहीं है। तो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम सेज दैट लेट थाउजेंड्स ऑफ कल्प्रिट्स गो फ्री। उसका एडवांटेज उठा के वो फ्री हो जा रहे हैं, होने दो, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वन पर्सन हु इन मतलब नॉन जुडिशियली, या उसको जो है अगर वो बेगुनाह है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। बट वी नीड टू रियलाइज, ठीक है, कि जो है वो हम किधर, हमारा स्टैंड क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, वेयर वी आर गोइंग, एंड दीज आर द सर्टेन थिंग्स। चलो अब हम इस पे डेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है इंटरव्यू है, और अभी इंटरव्यू का एक पार्ट बहुत मेजर रहता है, जो नहीं कंप्लीट होगा तो आपका टॉपिक इज नॉट ओवर, योर टॉपिक इज नॉट कंप्लीट। अभी आपने व्हाट इज एन इंटरव्यू, वेट अ मिनट, व्हाट इज एन इंटरव्यू पढ़ा, और इसका प्लेसमेंट में या बाकी चीजों में रोल क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पढ़ा। अभी आपके सामने एक पूरा सेट है कि इंटरव्यू में हम मिस्टेक करते। सो मेरे पास एक लिस्ट है 7 अनयूजुअल इंटरव्यू मिस्टेक्स। अब आपको उसके लिए टाइम बचा के रखना है, उससे पहले आपका कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। छोटा सा ही क्वेरी है कि सर क्या ये हम जो हमारा इंटरव्यू था, क्या ये नहीं जरूरी है? बेटा, फिर इसमें पहले इसको करेक्ट करो, ये इंट्राव्यू है, इंट्रा इंटरव्यू नहीं है। हाँ, ये अपने आप में फ्रेज गलत हो जा रहा है।
ये इंटरव्यू है ही नहीं जो आप बोल रहे हो, ये इंटरव्यू है। सॉरी ठीक, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, बट यू आर दी यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड टू योर सोल एंड योर सोल इज गिविंग द आंसर। हाँ, तो आप सर बोलो। हमारे सामने परिस्थिति जन्य विवेचना अगर हम करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आ गई और हम खुद से ही विवेचना करते हैं अपने दृष्टिकोण का, तो हम इसको समझे कि हम ये इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, इंटर नहीं है, दिस इज इंटरव्यू। मतलब यू आर इंट्रावर्टली इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ टू फाइंड आउट सर्टेन कंक्लूजन और टू रीच टू सर्टेन इन्फरेंस। ओके ठीक है, आप उसको फिल्टर करके थॉट को अपने दिमाग में मंथन करके यू आर ट्राइंग टू रीच टू सर्टेन कंक्लूजन, वो आपका जो है इंटरव्यू ही है। यू आर राइट। ठीक है, there are certain points that I wanted to add, or we very quickly, since we are running out of time, and we need to wind up everything so quickly. So bringing an interview book, पहला पॉइंट है ये आर्टिकल, ये भी हम आपको पढ़ा रहे हैं 7 अनयूजुअल इंटरव्यू मिस्टेक्स। तो आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर मान लीजिए इफ यू आर वेटिंग फ्रॉम द इन द लॉबी एंड यू आर हैविंग दैट अ बुक इन योर हैंड entitled How to Crack an Interview, so this will make a very negative impression. Being an interview book or how to face an interview, interviewer will think that you are not a confident candidate and not confident of yourself, that you are not a confident person who has his natural ability to face the interview process. So that way you should not carry such books in your hand. Then second, you unusual interview mistakes, never ask what company is this again in your life. अगर आप इंटरव्यू में गए और उन्होंने बता दिया कि वी आर लॉजिस्टिक्स बेस्ड कंपनी, वी आर सर्विस बेस्ड कंपनी, तो ये नहीं बोलोगे पार्डन मैं सुन नहीं पाया। नेवर आस्क व्हाट कंपनी इज दिस अगेन, रिपीट, ये क्वेश्चन आपको रिपीट करना ही नहीं, ये क्राइम है अगर कर दिया तो। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर यू टू रिसर्च वेल अबाउट द कंपनी जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यू टारगेट 10 कंपनीज ऑन योर रडार, 5 गुड कंपनीज ऑन योर टारगेट, एंड देन यू ट्राई टू मूव ऑन। देन पुटिंग, इफ यू आर ऑन टेलीफोनिक इंटरव्यू, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, वाइवा चलेगा अभी, वो क्या करते हैं, या तो ऑन होल्ड डाल देते हैं या फिर जो है वो कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि एक्सपर्ट की। सो पुटिंग द इंटरव्यूअर ऑन होल्ड ड्यूरिंग टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये ऑफ कोर्स नेवर आस्क हिम रीशेड्यूल द मीटिंग आल्सो, ये नेगेटिव पॉइंट है। डोंट पुट देम ऑन होल्ड। कई बार लोग क्या करते हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है, हाँ हूँ पार्डन रिपीट कर रहे हैं और बुक में आंसर ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये उसको सामने वाले को सब कुछ रियलाइजेशन होने लगता है ग्रेजुअली। सो नेवर पुट हिम ऑन होल्ड, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एंड नेवर आस्क हिम रीशेड्यूल द मीटिंग। देन देयर फोर्थ अनयूजुअल मिस्टेक, नेवर से प्रॉम्प्टनेस एज योर स्ट्रेंथ। आपसे पूछा जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आफ्टर शोइंग अप लेट। अगर आप लेट आए हैं इंटरव्यू में, तो यू आर लेट बिकॉज ऑफ टाइमिंग और प्रॉब्लम और रोड ट्रैफिक, बट यू नेवर से दैट पंक्चुअलिटी एंड प्रॉम्प्टनेस इज योर स्ट्रेंथ। तब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। If you are likely to be asked by the interviewer about your strengths, but never say that promptness is your strength. And weakness, for if you are asked about your weakness, so never say anything as your weakness that may directly hamper to the job objectives. सीबीआई में जा रहे हो आप और बोलोगे कि सर मेरी, कई बार लोग करते हैं वीकनेस ऐसा बना के रट के आते हैं कि वो बोलेंगे, और वो बोलेंगे ऐसा कि सामने वाले को लगेगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है,
अपनी पॉजिटिव को निगेटिव। ये एक ट्रिक है, पहले चलता था, अब नहीं चलता। कि उनसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर वीकनेस, सर मैं झूठ से मुझे बहुत नफरत है, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या आपको सीबीआई ले लेगा? इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब इन सर्टेन इंटेलिजेंस कंपनी, विल दे कंसिडर यू अ वेरी गुड कैंडिडेट? So weakness should also not hamper the objective of the job. Fifth point, never refer yourself as third person. ये तो third person हमने आपको report writing के लिए बनाया। I said that your report should be, your writing style should be in an objective method, but never report yourself in the third person. ये आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को third person like दिस इज द सचिन तेंदुलकर या आई एम सचिन तेंदुलकर, ये बहुत हाई लेवल पे तो जो भारत रत्न है उसके लिए चल जाएगा। बट इफ आई स्टार्ट टेलिंग दैट आई एम दिस सुधीर नारायण सिंह या समथिंग, या दिस इज सुधीर नारायण सिंह, सो थर्ड पर्सन में बार बार अपने आप को मत रेफर करिए अगर आप उतने हाईलाइटेड पर्सन नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। क्लियर? और प्रॉपर नाउन के पहले तो द लगाइए ही मत। Never ever use article the before your name. ठीक है? अब बोलोगे सर द कपिल शर्मा शो तो है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। द कपिल शर्मा शो तो है, वहां द कपिल शर्मा के नाम के लिए नहीं है। इट इज बिफोर द नेम ऑफ ए शो। क्लियर? They want to indicate that this is only one in the universe. Clear? This show is only one. This is unique. So they have used it trickily, the grammatical blunder, and that is not used for proper noun. Rather, that is used for marketing purpose. समझ में आया बेटा? तो आप अपने नाम से पहले द नहीं लगाएंगे, थर्ड पर्सन नहीं यूज करेंगे। It is advisable not to do so, as you may get disqualified for the job if you are doing so. Then 6th point, never take off your shoes during the interview. कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, लोगों के पैरों में कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दे विल, अगर नए जूते पहन के तो जाना ही नहीं चाहिए इंटरव्यू के लिए, और क्योंकि वो पैर काटेगा, आपको दिक्कत करेगा, अनकंफर्ट करेगा। सो बट नेवर टेक ऑफ, जूते उतारिए नहीं कभी भी, उसमें पैरों में चाहे कितनी तकलीफ हो, इवन इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द शूज। देन कुछ लोग क्या करते हैं, उनका फेस ऐसा दिखता है जैसे वो कुछ चबा रहे हैं, या जॉ मसल को टाइट करते हैं बार बार, टाइटनिंग जॉ मसल, दैट शुड नॉट बी। नॉन वर्बली बहुत सारी चीजें हैं दैट आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ, बट अवॉइड च्यूइंग गम्स पर्टिकुलरली। और च्युइंग गम खाना भी, मतलब मुंह में कुछ ऐसा लेके मत जाइए चबाते हुए इंटरव्यू रूम में, जिससे कि आप माउथ फ्रेशनर टाइप का कुछ लिए हैं, कॉल हो गया, आप उसको बाहर नहीं कर पाए, माउथ में लेके चबाते हुए पहुंच गए। That all these things are negative and these are unusual. So 7 unusual interview mistakes I also discuss with you. Now we have a very quick round of question answer. If you have any, please ask. If you have any question, please feel free to ask. Anyone? थोड़ा लेट हो गया. We continued the session for longer. Yes, please. Sir, my question is that, sir, you told that we should not tell our weaknesses or strength to the interviewer. But sir, sometimes I have seen that, sir, interviewer themselves ask that what is your weaknesses, or why should not we select you? So, sir, how can we deal with it? Like, why they ask the question? Why should we select you? Why should not know? oh, Why sir, should we? They will sir, ask your. They will ask your strength. So your strength should be used. Not your strength should be in the alignment of the job requirement. Your weakness should also be like that. That it should not directly hamper the objective core requirement of the job. अब अगर कोई ये बोलता है बेटा, if somebody is answering that telling truth is my strength, and the person is applying for the for the job of CBI or RAW
will the government will take, or even FBI, any intelligence company of the world. Clear? आपको मैं एक बड़ा सा छोटा सा वो आर्टिकल है, IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर ने बहुत पहले लिखा था, 10-12 साल पहले. वो क्या आर्टिकल था कि महात्मा गांधी अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन कोका कोला, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बेस्ड कंपनी में महात्मा गांधी ने वाइस प्रेसिडेंट HR के लिए जॉब अप्लाई कर दिया. तो उनको जवाब आया कि डियर मिस्टर महात्मा, आफ्टर गोइंग थ्रू योर एक्सटेंसिव बायोग्राफी वी केम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड नॉट रिक्रूट यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. हम आपको इन रीजन से रिक्रूट नहीं कर सकते. क्या रीजन थे वो? फर्स्ट, you have said that you have a tendency to speak the truth, and your book is My Experiment with Truth. So the secret of our company will always be in danger to be leaked. Secret documents of our company and its secrets will always be in danger to be leaked. We are a soft drink based company, and we do not hesitate even in mixing pesticides in it, in our soft drinks. And what is this ahimsa thing that you wish to propagate? Clear? We are keeping your CV with us, and we have advertised for the post of vice president, not the virtuous one. We are keeping your CV. We are keeping your CV with us, and in case any revolution will come in future, we will think of rehiring you. But till date, we are putting your CV on hold and we cannot hire you. क्या समझ में आया? What did you understand? आपने क्या समझा? कि interview is a process of selecting the like-minded people, those who will be asset to the company और द कॉर्पोरेट. तो जैसी जो कंपनी है उससे अगर आपका मिसमैच है, एबिलिटी, स्किल्स, आइडियोलॉजी, सो यू वोंट बी वर्किंग देम फॉर लॉन्गर रन्स, लॉन्गर टाइम्स, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. वो चाहते हैं लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप चाहते हैं ना, वो नहीं चाहते आज आपको नौकरी दे कल आपको हटाए. They will have to recruit and spend more again and again for hiring the another candidate. प्लीज जल्दी से पूछो, और कुछ पूछना है तो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. सर सॉरी टू इंटरप्ट सर बट फोन की बैटरी एकदम डेड हो रही है सर. 1% इज लेफ्ट. ओके, यू मे क्विट. अटेंडेंस हैज माइट हैव ऑलरेडी बीन टेकन बाय रोहिना, सो आप क्विट कर सकते हैं. सर. हाँ, आपने पूछना है किसी को कुछ तो जल्दी पूछिए. प्लीज आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव. जल्दी बोलो, or should I close it? If you don't have any question, so thank you. Today we have the interaction on interviews and placement, a bit focused, and ultimately we talked about types of interviews and 7 unusual interview mistakes. Thanks a lot. We'll see you again. Thank you so much, sir. Thank you, sir.